Assalamu alaikum, first year class. We are doing chapter 5, that is network communication. I'm your teacher, Mrs. Khadija. Up till now, we have discussed different concepts which are related to computer networks or network communication. Today, the topic under discussion is types of network. We can divide network into different types on many bases. Today, we will discuss different types of networks that can be developed and maintained on the basis of physical area a network may cover. According to this criteria, there are different types of network which are discussed in your book. Four of them are virtual private network, that is VPN, local area network, that is LAN, metropolitan area network, that is MAN, wide area network, that is WAN. There's another type of network which is very common nowadays, which is called personal area network or PAN. This type is not discussed, but we will also discuss this today. First, we are going to discuss personal area network or PAN. Personal area network is actually a type of network which cover a smallest, we can say, area or smallest physical area. And this network is used to connect devices which are located or which are related to the a person's personal devices. We can say devices which belongs to an individual person, and the network of such devices is called personal area network or PAN. जैसे हम लोग अक्सर अपने घरों में अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं डेटा शेयर करने के लिए, और समटाइम्स जो है हम उनको प्रिंटर के साथ, जैसे आजकल हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, such type of network is called personal area network. The devices that we can connect in this type of network can contain or may contain computers, smartphones, tablets, PDAs or personal data systems, or it may contain other communication devices like printers or scanners or mic or microphone. Such type of network is called personal area network. Usually this type of network is connected using wireless medium, and it is a very short range medium, mostly up to 10 meters depending on the quality or type of medium we are using. Secondly, devices that we connect using in this network medium is mostly Wi-Fi or Bluetooth. Like in our house, we used to connect one mobile to another mobile either using Wi-Fi or either using Bluetooth for sharing data, files, and videos and other things. On the other hand, nowadays that we connect our mobiles to printers with capability of Bluetooth signals. This is also example of personal area network. And sometimes we connect our laptop to our mobiles or any other personal device, either using Wi-Fi or Bluetooth. This is also example of personal area network. Second type of network that we are going to discuss is local area network. It is one of the most common form of network which we observe in our surroundings. In local area network, computers are connected normally in a single building or maybe group of buildings, like in school, and two branches of school which are located nearby, or like example may contain university lab or
computers which are connected in a building or office. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर भी जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं दे आर फॉर्म ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क एज कम्पेयर टू पर्सनल एरिया नेटवर्क इट covers more area but as compared to other types of network this network covers less area. Using this type of network we can connect both type of resources like hardware and software. Hardware like printers or hard disk or any other devices, and we can also share applications or documents or different group scheduling documents or emails. Companies usually connect computer which we can say consist of in a building to share different types of documents on which their employees are working. और usually ऐसा होता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है एक से ज़्यादा लोग भी समटाइम्स एम्प्लॉयज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं and these documents usually are shared and or different types of information shared using local area network. If we talk about different characteristics or features of LAN, some of them are that it spans or it covers a small physical area, but the communication speed between computers and devices is very high as compared to other communication medium. The reason is that usually on a LAN, computers are connected or devices are connected using wires, and wired mediums are faster as compared to wireless medium. और ये already हम communication medium के topic के अंदर discuss कर चुके हैं. Secondly, as we are using wires and signals are spread out in specific paths, so this type of network is more reliable as compared to a wireless network. Another feature of local area network is that it connects less number of computers as compared to when we talk about a wide area network in which computers are connected around the world. So, but sometimes a company which has many floor building, when they connect their computer, it comes in local area network. And in local area network, both type of architectures can be adopted that we discussed in our previous lecture, depending on the size of the network. If company has 10 or less computer, then they can adopt peer-to-peer network architecture. Otherwise, if they have 10 plus computers and there is a load of work, then usually they prefer client-server network to connect their computers. Some companies for whom speed does not matter, they may connect their computers through wireless medium, but mostly local area network is developed using cables because it gives reliable and high speed network connection between computers. Second type of network, which is very popular, which is very famous, that is wide area network or WAN. Wide area network spans a large physical area. It may connect computers in one city. It may connect computers across a city or maybe across the countries or even across the continent. It means that computers in WAN are connected even around the world, and usually we call it internet as well. अब ज़रूरी नहीं है
कि पूरी दुनिया में जो ये फैला हुआ है नेटवर्क, सिर्फ यही वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है. There are many other examples of wide area network in which different organizations connect their computers even in a city or maybe in different cities of a country. जैसे जो different banks होते हैं और उनकी जो branches होती हैं एक शहर के अंदर भी मौजूद होती हैं और समटाइम और ऐसा भी है बिल्कुल कि दूसरे शहरों में भी उनकी ब्रांचेस मौजूद हैं. तो जो इनका नेटवर्क है वी मे कॉल इट वाइड एरिया नेटवर्क. Otherwise, internet is one of the best example of wide area network as it is spread out all over the world. Because of the range of the network, a wide area covers. This type of network is also referred to as long haul network. Wide area network, in other words, we can say sometimes if we connect more than two LANs, then it also made up a wide area network. It means जैसे मैंने के पहले कहा कि सिर्फ हम इंटरनेट को ही वाइड एरिया नेटवर्क एग्जांपल नहीं कहेंगे. अगर कोई कंपनी अपनी 2 ब्रांचेस को भी एक शहर के अंदर जो है वो कनेक्ट करती है, then it will also be example of a wide area network, especially अगर वो पब्लिक नेटवर्क्स को यूज करके अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, then it will be referred to as wide area network. और इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल बैंक्स के अलावा जैसे डिफरेंट जो मोबाइल कंपनीज हैं और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि जो अपनी ब्रांचेस को ना सिर्फ अक्रॉस द सिटी कनेक्ट कर रही होती हैं बल्कि वो अक्रॉस द कंट्री समटाइम उनकी जो कुछ ब्रांचेस हैं जिनके हेड ऑफिस होता है वो किसी और कंट्री में भी होता है. जब वो उसके साथ भी अपनी बाकी ब्रांचेस को जो उनकी बाकी कंट्रीज के अंदर होती हैं उनको कनेक्ट करती हैं, and it is also example of wide area network. If we talk about features or characteristics of wide area network, some of the characteristics of WAN are that it spans or it covers a large area as compared to remaining all the type of network, either it is PAN or either it is a local area network LAN. And the next network that we will discuss, that is metropolitan area network. As compared to all the networks, wide area covers the largest physical area. Secondly, the communication speed is usually slow as compared to LAN. Reason is that because wireless medium are usually preferred in wide area network, and because of the cost, many organizations do not यूज लीज्ड लाइन्स. इसका मतलब ये कि वो अपनी स्पेसिफिक लाइन्स फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछाती हैं या माइक्रोवेव स्टेशन यूज नहीं करती हैं. जो ऑलरेडी पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं या पब्लिक ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होती हैं किसी कंट्री के अंदर, उन्हीं की लाइन्स को यूज करके ये अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं. सो such type of network provides slow speed as compared to LAN. And already मैं आपको बता चुकी हूँ कि computers are usually connected through public networks. Sometimes some companies may use leased lines, यानी specific lines जो हैं वो उनके through computers को connect कर सकती हैं. वो भी within city usually prefer करती हैं, ठीक है. लेकिन across the country जो है वो leased lines जो कि बहुत expensive पड़ती हैं, तो इसलिए public networks को use करके ही data transfer किया जाता है through wide area network. And one of the feature is that we can say that in when we connect multiple LANs which may exist in a city or in different cities of countries.
And one of another feature drawback we can say of WAN is that communication error आने के chances जो है वो WAN में ज़्यादा होते हैं as compared to LAN, चूँकि wide area और एक बड़ा area और एक large area cover करती हैं, ठीक है, और वायरलेस मीडियम भी यूज़ होता है, तो जो सिग्नल्स हैं उनके एक्यूरेटली पहुंचने के चांसेस जो है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू लैन, जिसमें एक स्पेसिफिक पाथ जो है फॉलो किया जाता है, तो उसमें कम्युनिकेशन एरर्स आने के चांसेस कम होते हैं. And the last feature that we can discuss about WAN is that using WAN, most of the time hardware cannot be shared. We can share usually files and different type of messages or voice or videos. इसके अलावा ये जो हम इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू इंस्टाग्राम, या हम कोई पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं या हम कुछ चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं. सो WAN इज यूजली यूज्ड फॉर such type of communication. हाँ, अगर कोई कंपनी लीज लाइन या अपनी पर्सनल लाइंस को यूज करके कनेक्ट करती है, देन इट इज पॉसिबल कि वो हार्डवेयर को भी जो है वो शेयर कर रही होती है, चाहे वो सर्वर्स की हार्ड डिस्क हो, चाहे वो कोई और हार्डवेयर रिसोर्सेज हों. Next type of network, that is metropolitan area network. It is actually in between form of LAN and WAN. Metropolitan means a network which may contain LANs within city. Metropolitan का मतलब ही ये होता है कि within city. तो ऐसा network जो devices को और computers को within city जो है वो कनेक्ट करता है, such type of network is called metropolitan area नेटवर्क. यूजली इस तरह का नेटवर्क प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बना रही होती हैं, और इसमें चूँकि विद इन सिटी होता है तो इस तरह की जो नेटवर्क है उसमें पब्लिक नेटवर्क्स के बजाय स्पेशल लीज लाइंस फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करके या माइक्रोवेव स्टेशंस, जिनको हम बूस्टर्स भी कहते हैं, उनको यूज़ करके डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है. As compared to WAN, it provides high speed, but it is slower than local area network. और स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि जो मीडियम है बीच में वो ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म का यूज कर रही है. राइट. यूजली जो है जो इसकी मोस्ट फेमस फॉर्म है या जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो देखने में नजर आती है इज it's used by the mobile companies. Usually mobile companies जो है वो boosters के through जो है वो metropolitan area network जो है वो form या develop करती हैं. इसके अलावा within city जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बैंक्स वगैरह हैं, वो भी अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है बना रहे हैं. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अगर ब्रांचेस एक शहर के अंदर हैं तो वो भी जो हैं आपस में अगर कनेक्टेड होंगी यूजिंग स्पेशल लाइंस और पर्सनल या प्राइवेट मीडियम के थ्रू, देन दे विल कम इन द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. बनाने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाने का पर्पस ये होता है कि इट इज़ मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क. क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में क्या हो रहा है कि पब्लिक नेटवर्क्स यूज किए जा रहे हैं और डेटा जो है उन्हीं लाइंस के थ्रू ट्रेवल कर रहा है जिसको हर कोई उस सिटी और उस कंट्री के अंदर यूज कर रहा है, तो उसमें डेटा इतना सिक्योर नहीं रहता है. दैट्स वाई वो कंपनीज जिनका डेटा जो है सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे, वहाँ पे पब्लिक नेटवर्क्स के बजाय जब पर्सनल लाइंस को यूज करके नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, देन इट विल कम इन द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क.
Here are some of the features of or characteristics of metropolitan area network. We can say that it is larger than, or it covers a larger distance or larger area than LAN, but it covers smaller area than WAN or wide area network. The range is usually 5 to 50 kilometer, depending on and the requirement. It may cover more area than 50 किलोमीटर. यूजली जो सिटी की जो रेंज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सिटी का जो साइज उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है. नेक्स्ट, यूजली जो कंप्यूटर्स हैं दे आर कनेक्टेड यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जिनको हम पर्सनल लाइंस भी कहते हैं. It provides high speed communication as compared to wide area network. And secondly, they are mostly used by telephone companies. And इसके अलावा जो केबल टीवी नेटवर्क है वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आता है. एक सिटी के अंदर जो डिफरेंट केबल कंपनीज हैं और जो केबल टीवी केबल के थ्रू जो टीवी की ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रही हैं यूजर्स को, कंज्यूमर्स को. दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. The last type of network that today we are going to discuss is virtual private network or VPN. This is a special type of network in which an individual person, or we can say an employee, can connect to its office while he or she is in the other city. यूजली ऐसा होता है कि जब कोई एम्प्लॉय शहर से बाहर या किसी अपने ऑफिस से दूर कहीं होता है, आइदर जो है वो छुट्टियों पर है या वो कहीं मीटिंग के लिए गया है और वो अपने ऑफिस के साथ कनेक्ट करके कुछ डेटा शेयर करना चाहता है, ठीक है, या जो है कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, या कोई डॉक्यूमेंट उसको चाहिए और वो ऑफिस से लेना चाहता है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाईफाई कनेक्शन, there will be a special connection between the user and employee जो कि किसी और शहर में है, और वो उसके थ्रू जो है अपनी कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा और देन वहां से वो डेटा जो है वो ले सकता है. इसके अलावा जहाँ वो कहीं और गया है मीटिंग के लिए और वो चाहता है कि उस मीटिंग की जो लाइव कवरेज है उसकी कंपनी के बाकी लोग देख सकें, तो इसके लिए भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं. Sometimes company uses public networks ताकि लो कॉस्ट जो है ये एक्सेस हो, एंड अगर उनका डेटा बहुत ही सिक्योर है और वो नहीं चाहते कि उनका डेटा जो लीक हो और किसी और के पास जो है ये जो मीटिंग या जो कम्युनिकेशन है वो किसी और के जो है वो पास चली जाए या कोई इसको ट्रेस कर ले, तो कंपनी जो है वो स्पेशल नेटवर्क्स जो है वो या लीज लाइन के थ्रू भी अपने यूजर्स को कनेक्ट कर रही होती हैं टू द ऑफिस. राइट, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि समटाइम ऐसा हो सकता है कि वो एम्प्लॉय किसी और शहर में अपने घर में हो या किसी ट्रिप पे हो, या हो सकता है कि वो ऑफिस के काम से ही किसी और शहर में गया हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो उस वक्त ऑफिस में ना, और उस वक्त वो ऑफिस में कनेक्ट होके कोई काम करना चाह रहा है या कोई नेटवर्क से उसको कुछ चाहिए चीज़ या उसने देनी है कोई चीज़ उन एम्प्लॉयज को जो ऑलरेडी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. Some of the features of virtual private network are that sometimes it uses public networks, and sometimes like internet, and sometimes such type of network use lease lines or personal lines. If a company is using personal lines or lease lines, then it is more secure as compared to a wide area network or a public network.
Because of such type of network, sharing of videos and especially video conferencing is possible. आप लोग अक्सर न्यूज़ में ये देखते हैं कि जो डिफरेंट रिपोर्टर्स हैं वो डिफरेंट इलाकों में जाके रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और कुछ इलाके होते हैं जो बहुत दूर दराज होते हैं और वहाँ पे कोई जो है उन्होंने कवरेज करनी है तो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह रहे होते हैं। और ये इस तरह के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि जब किसी कंपनी का एम्प्लॉय कहीं और दूर दराज जाके वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा है, और समटाइम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है, समटाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है, तो इस तरह के नेटवर्क को हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं, right? And if a company is using public networks, then it is a cheap communication medium, especially जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उनके लिए इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए एक चीप कम्युनिकेशन है if they are using public networks, for example internet.